Lately, I've been losing sleep, dreaming about a victory. Lately, I've been too hard, picturing them all counting dollars, maybe counting stars. So hello Deepak, I welcome you on our YouTube channel Aviation Live in regard of taking the feedback of this spoken English classes in which you enrolled for 1 month. So Deepak, please tell the audience, okay, tell the people that you know how was the class, how was the crash course, and from where you came to know about us. Okay, what made you join this spoken English classes and all. So a Uh, kind of a small feedback I just want from you. So yeah, please share. Thank you, sir. You have given me the opportunity to share my feedback. Sir, on the month of December, I joined the aviation crash course. Then the month of January, I joined spoken English batch. When I joined the batch, I can't speak English fluently, and there is no confidence in me. After I joined the class, you just boost us, and I also keep some points whenever it group discussion. And there is if I looking back 1 month before, then there is no words in my sentence. There is I can't make a sentence correctly. And right now I am so good, sir, in speaking. Okay, you are like thinking like like yes, this crash course was useful and like Sir, it has given given a good change, a very yes, not even good, a very fantastic change in your personality, right? So now I would like to know Deepak, like what was there in the course basically in 1 month, like what did you learn, the grammar, the group discussion things, lecture it, what was like it was all sir, about? there is basically we just learn the grammar portion. Then we go for sentence making. After we go, then we go for translation. How we the short type sentence we have to convert into English. Then we just speak about some topic. Then we go for group discussion like this. So basically, like was it useful, was it helpful for you? I just want to know that. Definitely. I right now I also want to join my sister that is she get this course definitely as soon as Okay, possible. okay, okay. You want your sister to, like join this aviation life crash course. Fantastic, fantastic. Definitely, buddy. Even you will get discount also if your sister will join because like we give discount to the people, like Sir, to the known people basically. So apart from all sir, these things, buddy, like and this was all about like your journey of 1 month and finally like I think yes you are now finally prepared for the ground staff interview or for the cabin crew interview, right? sir. And before like joining the classes, how was your personality? Were you like feeling confident? Were you able to speak in English even? I think no, right? You're facing Sir, problem in before speaking English. in Yeah. English, no sir, no sir. Even I can't speak one sentence correctly. There is a lack of there is a number of mistakes in the sentence, sir. There is a answer tense problem, whichever I did past to present, present to past, and there is most grammatical mistakes, sir. And there is no confidence, zero confidence, sir. Then when I joined the class after 3 to 5 days, there is much confidence, sir. I realized that if I go for speaking English, then I can't think that I have to speak in English. How should I say? Is there any mistake? Then this will go wrong. Then Mm-hmm. right now there is no problem, sir. There is no problem. Fantastic, 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 buddy. It has been, it has all happened just because of your efforts and like your hard work, by the way, right? That's your yes, sir. It is Yeah. not only the coach who works; it is a student also who works, and a Also, student I'm also not who sure. contributes a lot, Sir, right? sir. Okay, Everything is I, possible, sir, because of you. yeah, That you suggested me some to day read the newspaper daily and yeah. to we have to whenever we free then we have to go for Netflix with the subtitle of English, and there is an English speaking up. You Yeah, suggested yeah, also. yeah, yeah. That's why it is. Apart from all these things, as I've already mentioned, that it is the coach who just shows the direction. At the day end, it That's is the student only who follows it and who grabs sir, the who nails the like the objective, right? sir, sir, So now Deepak, like this was all about the English and all. ये तो रही English की बातें, अब हिंदी में बात करते हैं क्योंकि like ठीक है बहुत सारे लोगों को like सर, English समझ में भी नहीं आती, right?
तो बेसिकली आपका फीडबैक मतलब कैसा था, मतलब ये जर्नी कैसी थी, मतलब 1 महीने की, मतलब मजा आया कि नहीं आया आपको यार, ये सर बताइए। मतलब हाँ, ऐसे था कि जब मैंने ऐसे बोला कि मतलब मेरे दोस्त था, मैंने बोला कि मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अच्छा करना है, हाँ कर ले। वो तो पहले था हाँ, ये जब मैं 2-3 दिन हुआ जैसे कि उसके साथ बात करने की ट्राई किया, तो थोड़ा हाँ डगमगा हो रहा था। हम्म। लेकिन वो भी थोड़ा मजाक उड़ा, हाँ चलो सब नया नया इंग्लिश बहुत सीख रहे हो, ये कर रहे हो। उसके बाद सर आज के मामले में ना, आज के मामले में अगर मैं उसके साथ इंग्लिश में बात भी कर रहा था तो वो तो चौंक जाता है सर, अरे भाई तूने 1 महीने में इतना सीख लिया, ये कर लिया। हम्म। तो मेरे मेरे फैमिली मेंबर भी दंग रह जाते हैं कि अरे बच्चा 1 महीने में इतना वो सीख लिया सर। तो हम्म। मैं ये भी सारे बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि अगर मतलब कॉन्फिडेंट लेवल डाउन है या फिर इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश अगर फ्लुएंट नहीं है तो डेफिनेटली कोर्स ज्वाइन करना है सर। हम्म। और आगे भी अगर कोई भी रिश्तेदार हो या फिर कोई फ्रेंड्स वगैरह हो तो उनको भी ज्वाइन कराना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बड़ी, क्योंकि यार इंग्लिश जो है यार बड़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, राइट। यस आप सर। कहीं भी जाओगे घूमने फिरने आपको इंग्लिश में बात ही करनी पड़ेगी, राइट। इवन लाइक इन द फ्यूचर इफ यू विल गो टू यूरोप, ठीक है, यूएस एंड ऑल, आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी यार, ठीक है। यस सर। कम से घूमने फिरने के तो काम आ ही जाएगा कम से कम, ठीक है। तो मुझे सर ऐसा लगता है कि सबको सीखनी चाहिए, नॉट इवन लाइक फ्रॉम दिस जॉब पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फॉर द ट्रैवलिंग पर्सपेक्टिव एज वेल, राइट। और इसके सर अलावा दीपक, लाइक क्या ये कोर्स आपके लिए वर्थ इट था, एविएशन लाइफ का और लाइक स्पोकन इंग्लिश का, क्या ये यूजफुल है था? लाइक 2,999 हम लोग चार्ज करते हैं बेसिकली स्पोकन इंग्लिश का, सर तो लाइक सर क्या यूजफुल था? हाँ। उस अमाउंट में ये स्पोकन इंग्लिश क्लास मिलना ही तो बहुत रेयर है सर। अगर मैं हम्म। देखूं तो मैंने पहले से भी लिया था सर, कुछ कोर्स लिया था लेकिन मेरे को वो ढंग का लगा नहीं, वो 2-3 दिन में छूट गया सर, हाँ कर लेंगे, वो रिकॉर्डिंग सेक्शन था। हम्म। लेकिन इसमें जैसे कि हम फ्रेंड्स और आप जैसे कि हम इंटरेक्शन करते, कोई भी डिस्को टॉपिक को लेके जैसे भी आप जैसे भी कोई असाइनमेंट दिए हो हम वो पूरे करके आते, उसके बाद भी उसके ऊपर डिस्कशन करते। हम्म। तो सर ये तो बहुत हेल्पफुल था सर। चलो बहुत बढ़िया ना दीपक, बहुत बढ़िया ना, मतलब मज़ा आ गया यार, मतलब फीडबैक भी बहुत बढ़िया आपने दिया है, राइट। चलो मतलब थैंक यू फॉर बाय द वे टाइम निकालने के लिए, फीडबैक देने नो के लिए, ठीक है। सर। आई थिंक छुट्टी आपकी आज, तो आप बढ़िया फीडबैक दे पा रहे हो, राइट। बाकी बहुत मज़ा आया दीपक, है ना, फीडबैक लेके आपसे। एंड अब बाकी मतलब ऑडियंस को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, लाइक हमारा क्रैश कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए? सर अगर क्लास करना है, करना तो जो जैसे भी करना है तो सर, जैसे कि पहले मैं भी सोच रहा था कि हाँ शायद मतलब कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हाँ करना है कि नहीं करना है। लेकिन जब जब मैं खुद का मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जैसे भी तो क्लास तो करना है ही। अगर एविएशन इंडस्ट्री में जा रहे हो तो हमको तो बेसिक अगर पता है तो इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन इस इंडस्ट्री में कैसे कुछ मतलब अपना स्किल कैसे डेवलप डेवलप करना है, कि जैसे इंग्लिश एक्सेंट कौन सी एक्सेंट बोलना है, उतना ज्यादा वो सोफिस्टिकेटेड अगर चाहिए नहीं चाहिए, या फिर कितना सिंपल आज कैसे रख के अपना वो स्किल डेवलप कर सके, आगे आगे अपना करियर बना सके, और कोई स्पोकन इंग्लिश को लेके कोई भी दिक्कत ना हो। तो सर जैसे भी तो मैं सजेस्ट कराऊंगी तो जैसे भी करना चाहिए सर इसको। बहुत और बढ़िया इसी में दीपक, तो डेफिनेटली तो करना चाहिए, और मिस ही में नहीं करना चाहिए, जैसे भी तो ज्वाइन करना है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इंटरव्यू आपका निकलेगा एयरलाइंस का, ठीक है, आपने मेन क्रैश कोर्स भी किया, राइट। अभी सर मार्च मार्च फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक मेरा तो निकल ही जाएगा निकल इतना। जाएगा ना, बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि लाइक आपका डिग्री जब खत्म हो तो रिजल्ट आए, तो मतलब अरिजीत का भी वही सर सीन है, वो भी फाइनल ईयर में है, तुरंत उसका रिजल्ट आएगा, तुरंत इंटरव्यू देगा, तुरंत सिलेक्शन लेगा वो भी, सर ठीक है। तो ऐसा ही यार सिलेक्शन तो होगा, मतलब ठीक है दीपक, पैसा वैसा श्योर वेस्ट नहीं होता दोस्तों आप लोगों का, ठीक है। जेन्युइन मतलब क्लासेस चलती है और जेन्युइन तरीके से पढ़ाया जाता है, कोई मतलब हवाबाजी में बात नहीं चलती है, राइट। सर। तो ये है दोस्तों। तो चलिए दीपक, बाय द वे इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। एंड सो गाइज यू कैन ऑल्सो बिकम लाइक दीपक, आप भी दीपक की तरफ इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं 1 महीने में, सिर्फ 2,999 रुपीज़ में दोस्तों। 2,999 क्या होता है, राइट, इट इज़ जस्ट नथिंग, ठीक है। नथिंग। लोग उतना मतलब खाने पीने में उड़ा देते हैं, ठीक है, 2,999 इज़ नथिंग। सो दोस्तों अगर आपको लाइक इंग्लिश बोलना सिखाया जा रहा है इतने कम दाम पे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, राइट। इसके अलावा मैं आपको एयरलाइन ज्वाइन करने के लिए भी टिप्स दूंगा, टेक्निक्स दूंगा, बहुत सारी चीज़ें रहती है और भी, राइट। बेसिकली आई यूज टू वर्क इन एयरलाइंस एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस being in aviation life, right? And I'm working as a cabin crew coach also with Team Aviation Life. So dosto, that was all about today's session, and let's beat in the next video. So guys, bye bye and jai hind to all.